नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस में हम ये मानते हैं कि मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड अबेकस, मतलब कैलकुलेशन और गुणा भाग इससे बहुत कुछ ज़्यादा मैथमेटिक्स है। गणित एक सोच है, गणित एक काम करने का तरीका है। तो इसलिए हम बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके आते हैं जो कि मैथ्स टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और जो भी मैथ्स पढ़ना चाहता है या अपना मैथ्स रिवीजन करना चाहता है उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही उपयोगी होते हैं। उसी सीरीज में ये एक वीडियो सीरीज है, इसका नाम है MCC मैथ्स कोर कॉन्सेप्ट्स, जिसमें कि हम अलग अलग जो मैथ्स के कोर कॉन्सेप्ट हैं उनको लेके आते हैं और आपसे चर्चा करते हैं। जैसे कि ये है ट्रायंगल टू मीन्स ट्रायंगल की सीरीज में शायद 2 या 3 वीडियोज़ हैं, जिनमें से दूसरा वीडियो है ट्रायंगल 1। आप नीचे के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उसकी लिंक, और उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि ट्रायंगल के पॉइंट क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, साइड्स क्या होती है, कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इस सीरीज में हम सारे कोर कॉन्सेप्ट जो हैं उनको लेके आते हैं। और ख़ास बात यह है कि हम उनको बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में, आसान भाषा में लेके आते हैं, और साथ में कभी थोड़ा कंप्रोमाइज़ भी करना पड़े ज्ञान से तो हम व्यवहारिकता को ज़्यादा जोर देते हैं कि उदाहरण समझ में आए। ऐसे उदाहरण दें जो आपके जीवन से संबंधित हो, जो आप उसको जी चुके हैं या जो आप उपयोग में ला रहे हैं। ये हमारा प्रयास है। तो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू पॉपुलराइज मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, नॉट टू शो अवर स्कॉलरिटी और नॉट टू शो दैट वी नो अ लॉट। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हर कोई मैथ से कंफर्टेबल फील करे और ये फील करे कि मैथमेटिक्स जो है ये कोई मंगल ग्रह की वस्तु नहीं है, ये हमारे रोज के उपयोग का ज्ञान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास है ट्रायंगल 2, जैसा कि टॉपिक मैंने कहा, इंटीरियर एंगल्स पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। लेट अस सी व्हाट इज दिस ऑल। तो हम शुरू करेंगे हमारे ट्रायंगल से। जैसा कि हमारी परंपरा है, हम कैसा भी ट्रायंगल बनाएंगे, जो दिल में आ गया वो करेंगे, क्योंकि हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं और हमको हमारी मन मर्जी करने का चॉइस है। ऐसा बिल्कुल आड़ा टेढ़ा जितना आपसे बने विचित्र उतना विचित्र डायग्राम बनाइए। तो इतना कोशिश कीजिए कि ट्रायंगल है और ट्रायंगल दिखे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो पता लगेगा कि इतने लिबरल हो गए कि साहब है तो ट्रायंगल लेकिन रेक्टेंगल बना दिया है। ऐसा नहीं करना है। अब इसको मैं कुछ भी नाम दूंगा, ए एफ, और पीछे से एक आधा अक्षर ले लेता हूँ एक्स, AFX। ये मुझे पसंद है आज की डेट में। ओके, क्योंकि वर्टेक्स हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे और साइड्स उसके सामने की, ए के सामने की साइड स्मॉल ए लिखी जाएगी, एक्स के सामने की साइड स्मॉल एक्स लिखी जाएगी और एफ के सामने की साइड स्मॉल एफ लिखी जाएगी। थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है वो, इट इज एफ। ओके, नाउ देयर आर थ्री एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ओके, इंटीरियर का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन मतलब क्या होता है? जो घर के अंदर होता है। इंटीरियर डेकोरेशन जैसे एक्सटीरियर पेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, ये अलग अलग शब्द हैं। इंटीरियर डेकोरेशन मीन्स वॉट एवर इज डन इनसाइड द हाउस, इनसाइड द रूम, इनसाइड द हाउस। सो इंटीरियर जैसे कहते हैं वो एरिया बहुत रिमोट इंटीरियर में। जब मैं आई वॉज ए चाइल्ड अराउंड 71 की बात है, माई फादर वॉज पोस्टेड इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट विच वॉज इन मध्य प्रदेश दैट टाइम, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब वो छत्तीसगढ़ का पार्ट है। तो इट वॉज सच एन इंटीरियर, वहाँ पे अबूझमाड़ वगैरह एरिया थे, दे वर रियली इन द इंटीरियर। सो इंटीरियर मीन्स, लेकिन कंडीशन क्या है कि आप कोई डायग्राम में दूसरे थोड़ा सा बताता हूँ। सपोज ये कोई फिगर है, कैसा भी फिगर है, ऐसा 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 चित्र सा फिगर है ये। तो इफ देयर इज सम पॉइंट विच इज हियर, सो इट इज इन द इंटीरियर ऑफ द रीजन। ये कोई रीजन है, कोई डेल्टा रीजन है, जहाँ पे नदी समुद्र को मिलती है, समुद्र में जाके मिलती है, तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे जोग्राफिकल रीजन बन जाते हैं। सपोज देयर इज अ पॉइंट हियर, so this point is in the interior, some point is here, it is in the interior. Is this point in the interior? सोचिए, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बाउंड्री हमने नीली नीली लगा रखी है उसके बाहर ये पॉइंट है क्या इंटीरियर में? यस, इट इज इन द इंटीरियर। इज दिस पॉइंट इन द इंटीरियर? ये तो बेचारा बॉर्डर पे है ना, अंदर है ना बाहर है, तो इट इज नॉट इन द इंटीरियर, इट इज ऑन द बाउंड्री, इट इज द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का पार्ट, इट इज साइड ऑफ द ट्रायंगल, इट इज नॉट इनसाइड। लाइक जैसे आप अभी
क्रिकेट मैचेस अपने होते ही रहते हैं इतने बड़े बड़े लेवल के. So some boundary line shot is there. Okay. Now player stops the ball on the boundary, but his hands touches the boundary. So it is thought as the line is out of boundary. बॉल तो रोक दी उसने कि उसकी बॉडी टच हो गई या उसकी बॉडी बाहर चली गई, बॉल अंदर रह गई with the ball in the hand. So that is not the interior. So therefore interior means strictly within that boundary which is drawn. So this is the notion of interior. जैसे आपने मम्मी को आपकी बनाते हुए देखा होगा, पराठा, स्टफ पराठा है, कुछ भी बनाते हैं, तो दैट पराठा, दैट स्टफ, आलू और व्हाटएवर यू आर डूइंग, इट शुड बी इन द इंटीरियर ऑफ द आटा. उसको ऊपर से नहीं लगाते हैं. ओके, सो इट इज द इंटीरियर. सो इंटीरियर मीन्स विद इनसाइड. तो इंटीरियर एंगल्स, सो दिस एंगल आई सी इज इनसाइड द ट्रायंगल and this angle is inside the triangle. I am marking it differently because they are of different measures, so इसलिए उनको अलग अलग तरीके से. So these are the interior angles. Let us see some more examples. Let us see, take this color now. Okay, and we have not used this side. इस side को बेचारे को neglect हो गया, तो इसको इधर use करें. So let us draw a line like this and this. And this. Okay, fine. It may not be very beautiful, जैसा आपको डिजिटल बोर्ड पे दिखता है उतना सुंदर नहीं होगा, लेकिन conceptually I am trying to reach somewhere which is very unreached most of the time. So let us call it, कौन सा अल्फाबेट में दिया था, K, G और M. ये यूज नहीं हुआ अभी तक, K, G और M. Okay, so K के opposite you have this side K, G के opposite your side G, and M के opposite your side M. This much we already learned. And this is the scalene triangle, mind you. Of course, if you count, sometimes this may be equal, but I don't think so. So this is a scalene triangle. All three sides are different. So all three angles are also different. Now again, I will use another ink now. So this is again an angle. This is again an angle, and this is one more angle. Now these all angles are inside the triangle. So they are what we call as the interior angles. And points in the interior of a triangle, supposing, although we have seen just now, but this is a point which is in the interior of the triangle, this is a point which is in the interior of the triangle, this is point which is in the interior of the triangle. So interior means anywhere inside the boundary. On the boundary भी नहीं. अगर on the boundary हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो triangle का part हो जाएगा. It will be side of the triangle. वो it will be a point on the sideline of the triangle, or it will be a point on the, for example, अगर मैंने जोश में सीखते सीखते मैंने ये बोल दिया कि साहब ये पॉइंट जो है D, अभी ये D साहब जो है, it is on the line, it is on the triangle side GM. ट्रायंगल GM पे इन्फिनिट पॉइंट है, एक लाइन पे अनंत पॉइंट हो सकते हैं, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं. तो उस GM का एक पॉइंट है, ये बाउंड्री पे कैच है, ये मतलब बाउंड्री के एक पाँव बाहर एक पाँव अंदर, इट इज ऑन द बाउंड्री. सो इट विल नॉट बी काउंट इंटीरियर ऑफ द बाउंड्री, इट विल नॉट बी कॉल्ड इन द इनसाइड द ग्राउंड, इट विल बी कॉल्ड ऑन द बाउंड्री. सो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीरियर एंगल्स. दैट इंटीरियर एंगल मीन्स प्योरली इट हैज टू बी इनसाइड द ट्रायंगल. लेट अस सी, मुझे थोड़ा सा बहुत सारे अलग अलग ड्रॉ करने का शौक है, तो एक बार मैं विचित्र सा ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ. वैसे ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, पर फिर भी कोशिश करते हैं. ऐसा एक ट्रायंगल में बनाइए. अब क्या बच गए थे अल्फाबेट हमारे, सफ़ेद तो नहीं चलेगा, ये चलता है. सपोज मैं क्या बच गया था, एल इज लेफ्ट एंड T is left, and what, Y. Oh, I hope it's readable. Yes. Now once again, these are all different sides, so I will call it L, and I will call it T, and I will call it Y. So once again, because all sides are different, so all angles will be different, and you will have different angles. So these are all parts of the interior of the triangle. Answer my one question, that I am making one right angle triangle. अब ये मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि राइट एंगल कहाँ है इसमें, बिकॉज आई एम ऑलरेडी इंडिकेटिंग. ऐसा नहीं है कि राइट एंगल को हमेशा ऐसा आसमान, ऐसा पहाड़ जैसा खड़ा होना पड़ता है. राइट एंगल कैन बी लाइक दिस आल्सो. ओके, क्वेश्चन इज, जैसे आप डायमीटर बनाते हैं, जब व्हेन वी विल स्टडी सर्कल, वी विल नो दैट एनीवेयर यू जॉइन टू साइड्स, टू एंड्स ऑफ द डायमीटर, दे मेक अ राइट एंगल. It's not that right angle has to be
like this, ये सीधा खड़ा होगा तो right angle होगा, whichever way it should make 90 degree angle, so it will be a right angle. Okay, having said that, now this looks like an isosceles right angle. It look like, दिख रहा है ऐसा कि ये साइड जो है ये करीब करीब इसके बराबर है, सपोज है, लेकिन फिर भी तो इफ दे आर इक्वल इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. इसे हम क्या कहते हैं, याद आया? नहीं याद आया तो आप, या मैं बताना भूल गया पहले तो आप लिख लीजिए, आप इसको बोलते हैं बेस एंगल्स, because this is the base we are talking with reference to this base, and these are also called opposite angles of equal sides. The opposite angle of equal sides are equal, which is also we have seen so many times. So these are the notions related to interior angles. Let us see what else. You can hear a couple of noises here, part of our life. उनको भी अपनी अर्निंग का राइट है. It's they are just vendors. Okay, exterior angles. तो हमने एक तो बात देखी इंटीरियर एंगल, अब हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल क्या होता है. जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड. एक्सटीरियर यू नो लाइक एक्सटीरियर पेंट्स होते हैं, जमाने भर के एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं, एक्सटीरियर पेंट होते हैं. तो एक्सटीरियर पेंट स्पेशल टाइप के पेंट होते हैं जो कि बाहर के धूल, धुआं, पानी वगैरह वगैरह, हवा सबको झेल सके. सो इट इज मेड ओनली फॉर द एक्सटीरियर. ऐसा नहीं है कि आप एक्सटीरियर पेंट को अंदर पेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप 100 रुपये की वस्तु वहाँ क्यों लगाएंगे जो आप 70 रुपये में काम करते. इंटीरियर पेंट्स आर cheaper to the exterior paint of the same level. So therefore exterior paints are always super coated, or they are having extra features because they are facing the dust and the noise and the air and the sun and water and whatnot, everything. So exterior means outside. So if I have a diagram, if I have this figure, okay, मैंने आपको बोला आप एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, मैंने आपको बोला मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं गवर्नमेंट मिनिस्टर हूँ, मैंने बोला कि आप जाइए और उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत अनरेस्ट है, आप उसको देख लीजिए. सो दिस इज द डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट का मैप है. तो आपने क्या किया साहब कि यहाँ से पहुँचे, ये आपका हेड ऑफिस है, आप यहाँ से पहुँचे और आपने यहाँ देखना शुरू कर दिया. So what I will say? I will say कि साहब you have to go inside the area because district is inside that boundary which is there. It is not in the exterior. You are looking in the exterior. आपको solution कभी नहीं मिलेगा क्योंकि आप उस एरिया में गए नहीं, आप बार बार घूम रहे हैं. तो exterior means outside and interior means inside. So same way when you have an angle, when you have a triangle rather, when you have a triangle like this, थोड़ा लंबा सा बना देता हूँ. मुझे बहुत शौक है, मेरे स्टूडेंट भी जो है, आज मुझे 40 ईयर हो गए पढ़ाते हुए, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो भी पेरेंट्स बन गए, बड़े बड़े हो गए, उनके बच्चे भी पढ़ने आ गए. सो दे विल आल्सो रिमेंबर दैट आई नेवर ड्रू सेम डायग्राम ट्वाइस. हमेशा अलग अलग बनाइए. और आपको भी आई विल इन्वाइट यू, इफ यू आर अ टीचर, इफ यू आर अ पेरेंट एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट आल्सो, आई विल इन्वाइट यू टू ऑलवेज थिंक डिफरेंटली, ऑलवेज टू मेक मोर डायग्राम, वेराइटी ऑफ डायग्राम्स. इट ओपन्स योर माइंड. या आपके दिमाग का पैराशूट खुलता है. अब घोड़े के जैसे आप दौड़ोगे नहीं कि वो आपको एक ही लीग में दौड़ना है, नॉट लाइक दैट. योर माइंड ओपन्स. ओके, नाउ देयर आर 3 ट्रायंगल जो अभी हमने पढ़ा. इंटीरियर एंगल्स पढ़ेंगे हम कौन से, ये वाले, ये वाला और ये वाला. दिस इज द इंटीरियर एंगल. नाउ एक्सटीरियर एंगल, बहुत 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 ध्यान से सुनेंगे. एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ वन लाइन. Angle formed between this extended line and this line. Sorry. बहुत आवश्यक है कि एक लाइन एक्सटेंड हो तो और उसके बाजू वाली लाइन का एंगल. दिस इज द एक्सटीरियर एंगल. If I have to make exterior angle here, suppose, so I have to extend this line and I have to make an angle here. Can I make, ये सवाल सबको आ सकता है और आना ही चाहिए दिमाग में कि सपोज आई मेक दिस लाइन, आई एक्सटेंड दिस लाइन एंड आई कॉल दिस सम एंगल. हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर होगा.
Is it an exterior angle? Yes. क्यों? क्योंकि what is our definition? Extension of one side, angle formed by extending one side, angle formed between one extended side and one nearby side. So I have extended this side, and there is a nearby side. So angle formed between extension of a side and the near side. Similarly here, I can extend this side like this, and I can extend this side like this, and I can make two exterior angles. One will be for this side like this, and one will be like this. फिर ये बच गया, इसको भी कर ही देते हैं. You'll feel bad otherwise. Left over हो जाता है. So you should not leave anybody just like this. So ये भी. अब जब students, even some of the students, when they learn exterior angle and they are in a जोश कि मुझे exterior angle आ गया है, now what they do, let me show you. What they do, they feel that it is okay to make, suppose there is a triangle like this. Suppose a triangle like this. अब अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया यूं, okay, so this forms the exterior angle formed by extending one line and one adjoining line. Somewhat, it is my question to you, and you answer that question. Some people feel that if I draw a line like this, if I extend this also, then this is also, then this angle is also exterior angle. What is your opinion? Do you think it is exterior angle? Because it is outside. हमने क्या बोला? दो बातें बताई मैंने. एक मैंने बताया it should be outside the triangle, और दूसरा मैंने बताया it should be between extended line and one line of the triangle, side of the triangle, one extended side and one side of the triangle, and outside the triangle. Now here what is happening? It is outside the triangle, but it is between two extended lines. और आपने जो opposite सुना हमने, when we studied lines and angles, we had studied vertically opposite angles. So ये angle is actually this angle. So it is interior angle. तो exterior angle होने के लिए it's compulsory that one extended line should be there and angle should be formed between that extended line and the adjoining line of the side of the triangle. This is mandatory. इसमें कोई भी आपको choice नहीं है, कुछ भी आपकी creativity इसमें नहीं चलती है, वो ऐसे ही होता है. जैसे कि suppose मैं ऐसा extend कर दूँ इसको. Now is this angle an exterior angle? It is exterior angle. क्यों? Because again the triangle was suppose A, K, F. So these FK are extended here. One extended side and one nearby side. So that makes it exterior. So it's extremely important for you to understand as to what forms the exterior angle and what doesn't form the exterior angle. Let us take one more example. Suppose मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया. अब थोड़ा नॉर्मल सा बना देता हूँ, अदरवाइज सोचेंगे कि वो तो सर बनाते ही नहीं है, हमको आदत है, वो तो बनाते ही नहीं है. चलो आपको आदत है, सर बना देते हैं. ये था आपका राइट एंगल ट्रायंगल. अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ कि सपोज मैं इसको ऐसा बढ़ा देता हूँ आगे, और मैं इस एंगल को रिप्रेजेंट करता हूँ. Is this an exterior angle? Yes, it is. Because once again, it is an extended line. The angle formed between one extended line and one line already, one side of the triangle, one extended side and one side of the triangle, that forms an exterior angle. कोई इसमें मेरे ख्याल से किसी को confusion नहीं होना चाहिए. And let us finally one more round. Suppose I extend on this side also, and I form this angle. Although it's right angle, it's very well known, but still I have to indicate like this. Is this exterior angle? It will be exterior angle. What are these? These are interior angles.
Okay. So, and what about the point exterior to the triangle? That is also obvious. If there is some point which is not in the triangle, inside the triangle, like this point is exterior to the triangle, this point is exterior to the triangle, नहीं भी हो, वो ट्रायंगल के अंदर नहीं होना चाहिए, ना बाउंड्री पे होना चाहिए. बाउंड्री पे भी नहीं अलाउड है. जो इंटीरियर के लिए लॉजिक लगेगा वो एक्सटीरियर के लगेगा. बाउंड्री के अंदर भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी outside the boundary clearly, and it should be not on the boundary. It should be neither inside nor on the boundary. It has to be outside the boundary. तो वही वो एक्सटीरियर, जैसे आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, देयर इज अ पोस्ट कॉल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. तो वो जो इंडिया का अपने डॉक्टर जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह से बात नहीं करेंगे इन द सेंस डिप्लोमेटिक रिलेशंस. वो बात करेंगे एक्सटर्नल, जो भारत की बाउंड्री है उसके बाहर जो भी देश हो, भले वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कुछ भी हो, बोलीविया हो, जमाने भर के इतने बड़े बड़े देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, तो वो उनसे बात करेंगे. वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इंटरनल बात नहीं करेंगे. कर्टसी कॉल एंड ऑल दिस थिंग्स आर ओके, बट ही विल नॉट ऑफिशियली टॉक टू देम एज अ मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, बिकॉज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विल टॉक टू अनदर कंट्रीज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. वो इंडिया की बाउंड्री के बाहर बात करेंगे. ठीक है. सो सिमिलर लॉजिक इज देयर. सो पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल मीन्स पॉइंट विच इज नॉट इनसाइड द ट्रायंगल and point which is not on the boundary of the triangle. It has to be extremely out. It is possible that you have this point here, जैसे अपने भारत की बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर लगती है. तो अटारी बॉर्डर के ऊपर आप जब तक अटारी बॉर्डर है ठीक है, लेकिन 5 किलोमीटर उधर कुछ हो गया उस साइड, तो फिर तो एक्सटर्नल मिनिस्टर का काम, क्योंकि वो इंडिया की बाउंड्री भी नहीं है. इट इज इन दैट कंट्रीज बाउंड्री. सो दैट इज हाउ the whole concept external thing goes. Angle sum property. There is some property of exterior angles also. We'll discuss that, but let us first discuss the angle sum property. This is a very, very interesting property and which has a lot of applications. Already we have been informally discussing this property earlier also, but right now I'll give you a very formal definition of an angle sum property. कोई भी एक ट्रायंगल है, कैसा भी बना लो आप, कैसा भी, मतलब मैं बहुत ही विचित्र सा ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये बड़ा सा बना देता हूँ, ये बिल्कुल ऐसा ट्रायंगल बना देता हूँ. अभी तक ऐसा ट्रायंगल बनाया नहीं हमने, है ना. अब इनको अच्छे अच्छे नाम दे देते हैं. कुछ कौन सा लेटर छूट गया? एस छूट गया, एस छूट गया, फिर ABCDEFG H छूट गया, E छूट गया. दिस इज माय ट्रायंगल SEH या HES या SHE, जिस तरह से भी आप पढ़ना चाहो. ओके. और फिर ऑब्वियसली S के सामने स्मॉल s आएगा, स्मॉल s, H के सामने स्मॉल h आएगा, E के सामने स्मॉल e आएगा. दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. ओके. एंड इट्स अ स्केलिन ट्रायंगल, ऑल्दो लुक्स लाइक आइसोसेलेस, लेकिन ये स्केलिन ट्रायंगल है, मैं कह रहा हूँ. अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहता है कि if you measure this angle and you add them, so I call it angle E, although I should not call it only E, but still I call it angle E, angle H and angle S, and if I sum them, it will invariably give me 180 degree. This is the angle sum property. That sum of all the interior angles of a triangle is 2 right angles. If you add up all the angles of a triangle, it's giving always 2 right angles और 180 डिग्री. कैसा भी ट्रायंगल आप बना लो, और अगर आपको वर्ल्ड फेमस होना है बहुत जल्दी से, तो आप एक काम करो, तो 50 ट्रायंगल बनाओ अलग अलग डिज़ाइन के, और उनका मेजर करो एंगल, लेकिन एक्यूरेटली करना, और एंगल एक्यूरेटली मेजर करो सारे तीनों, उनकी ऐड करो. अगर आप एक भी ट्रायंगल ऐसा बना पाए इसकी टोटल 180 नहीं हो रही है, तो आप वर्ल्ड फेमस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि दुनिया मान के चलती है sum of the triangles is 180, sum of the interior angles of a triangle is 180 degree. और अगर आपने by the way ऐसा कोई ट्रायंगल बना दिया which is having sum of the angles as less than 180 or more than 180, you will be a world figure. And but first you will have to justify and measure accurately. It is just to make it more challenging for you. So try someday. एक आध साल लगाओ, कोई बात नहीं, दुनिया में फेमस होने के लिए सब कुछ करता है आदमी. So you try maybe long time, make any kind of triangles and measure those angles, they will be always 180 degree. आप कैसा भी ट्रायंगल बना लो, जो मर्जी है वो बना लो,
कैसा भी बिल्कुल, मतलब बिल्कुल यहाँ से लेके यूँ चले जाओ, उसके बाद में यूँ चले जाओ, यूँ चले जाओ, कैसा भी आप बना लो, भले ही पूरा यहाँ से यहाँ तक बना लो ये सब, कैसा भी जो जो दिल में है सब कर लो, कुछ छूट ना जाए, लेकिन उसके बाद भी उसका सम 180 ही निकलेगा. This is called the angle sum property of a triangle. That sum of the angles, interior angles of a triangle is always 180 degree. Exterior angles is 180 to 360 degree. वो हम अभी देखेंगे. So I hope it's clear to us that what is the meaning of angle sum property. Angle sum property means any triangle, sum of the interior angles is always 180 degree or two right angles. Let us also discuss the same, since we are already into measuring this side. So let us discuss one more point which was to be related to exterior angles of a triangle. So suppose I am having this triangle. Okay, I call it T J P. Okay, and I measure. So now, and I make this angle, exterior angle here. Now this is the side T, this is side J, this is the side P. Now these are different angles. So this is the angle T, this is the angle J, this is the angle P. Now there is one property called exterior angle property. What it says, now we are familiar with the term exterior angle, which is this red one, and we are familiar with the term interior angle, which are these P, J and P. There is one more related term. Let me write in cap properly so that you are not, there is no reading issue. Remote interior angles कर देते हैं. What does it mean? रिमोट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर कौन कौन से हैं? P, J और P तीनों इंटीरियर हैं, लेकिन रिमोट, अब ये जो P एंगल है इसके लिए रिमोट कौन सा है? ये और ये. सो फॉर P, सो लेट मी राइट द एंगल P, कुछ और भी नाम दे देता हूँ इसको, कौन सा चला कलर अभी? ब्लैक. ओके, सपोज आई कॉल इट S. So angle JPS, which is the red one, is equal to the angle PTJ plus the angle TJP. So this is the thing, means this exterior angle will be equal to sum of two remote interior angles. ये बहुत ही important property है. We use it so many times in trigonometry, we use it so many times in even geometry, in isosceles angle, everywhere, in every type it is used. That exterior angle is equal to sum of two remote interior angles. Now let us see one more diagram. It is not clear to you. Two more illustration will become more clear. This is what I assume. Let us take one more triangle. Let us take one triangle like this. Now in this triangle, this is our exterior angle. Now suppose I'll to keep things simple, let us suppose this angle is x degree, this is y degree, and this is z degree. So your this angle, your red angle will be equal to, or let us say t degree. So your t will be equal to x plus y. Now I ask you just now to think about it. Supposing I extend this side, and I make one angle here. I call it, suppose S. Now this S will be equal to what? This is the exterior angle. These are remote interior angles. So Z plus Y.
बिकॉज वी हैव टू ऑलवेज थिंक रिमोट, पास वाला नहीं। ये जो एस है इसके लिए एक्स तो पास वाला है, पास वाला नहीं, रिमोट दूर वाला। तो दूर वाले कौन से? वाई एंड जेड। सो दे एड अप टू दिस। लेट अस टेक वन लास्ट एग्जांपल ऑफ द सेम। I extend this side also now, and I call it, oh sorry, chalo. I call it, where is that? Suppose I call it angle Q. Now this Q is there, this is nearby angle, these are remote angle, so your Q will be equal to x plus z. So this is the notion of the exterior angle property of a triangle. Now going back to our angle theory, what are these? Y and Q, they form a linear pair. Why? Because they are on the same line, and they are also supplementary. Why? Because they make a straight line. So linear pair is always supplementary, but supplementary may be linear pair, may not be linear pair, as we saw in the case of parallelogram, as we saw in the case of parallel lines. Here what about these two? S and X, angle S and SX, they are linear pair and they are supplementary. Similarly, Q and Z, not Q, this was T. T and Z, they are linear pair and they are supplementary. So that sums up to complete the concept of exterior angle equal to sum of two remote interior angle and the angle sum property. This is an extremely useful property of triangles, that two sides had to be longer than the third side. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारी डेमोक्रेसी में भी होता है कि तीन लोग खड़े हैं, ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये दो एक तरफ हो गए तो तीसरे को उनकी बात माननी पड़ती है। दिस इज द नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी व्हाट हैपेंस if there is a majority, like it always happens, if you remember, अगर आप कभी स्टूडेंट, अगर आप टीचर हैं, एडल्ट हैं, मतलब अगर आप कोर्ट्स के फैसले देखते हैं, कोर्ट्स की स्टडी करते हैं कभी, तो आप हमेशा देखिए कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पे जब कमेटी बैठती है, हमेशा वो ऑड नंबर में बैठेगी। इट विल बी 3, 5, 7, 9, 11 इस टाइप के बैठती हैं। क्यों? क्योंकि एक आदमी तो जजमेंट दे सकते हैं कुछ भी, दो लोग अपोजिट जजमेंट दे सकते हैं। सो हाउ विल यू रीच अ डिसीजन? सो देयरफॉर ऑलवेज there is an odd number of people, like 3 people are there, 2 on one side, 1 on one side, 2 वाला जजमेंट माना जाता है। तीसरे वाले का वो ओपिनियन हो जाए, वो अपने जजमेंट लिखते हैं, सब लिखते हैं, बट दैट इज इन पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग आल्सो, सब कुछ है वो। लेकिन इफेक्टिवली जो है ये टू मेजॉरिटी जजमेंट है, दिस इज कॉल्ड, दैट इज व्हाई ऑलवेज जो भी सीरियस मैटर होते हैं, लाइक राम जन्मभूमि वाज देयर एंड सो मेनी सीरियस मैटर्स हैव बीन देयर, दे आर ऑलवेज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच is in an odd number, because so that it is known कि भाई इधर हो गए या इधर हो गए, ऐसे बीच में नहीं रहता है कि दो ने ये दे दिया, दो ने वो बोल दिया, तो फिर क्या करेंगे? So therefore it is always in an odd number. Okay, it may also happen that out of 5 people, 4 people say something and the 5th person says something. It's all okay, but question is a decision is taken by the two sides are more than the third side. वही लॉजिक मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ कि whenever in mathematics also, इफ यू हैव एनी ट्रायंगल, आप इसमें भी आपको अगर वर्ल्ड फेमस होना है तो आप कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए, ऐसा कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए और आप सिद्ध कर दीजिए कि ये और ये साइड मिलकर इससे छोटी होती है, या ये और ये साइड मिलकर इससे छोटी होती है, यू विल बिकम वर्ल्ड फेमस, बिकॉज इट आर ऑल, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीपल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस एंड इट हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट कि कैसा भी आप ट्रायंगल ले लो, कितना भी बड़ा ले लो, कितना भी छोटा ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो, जो दिल में आ वो करो, ऐसा ले लो, जैसा मतलब आपके दिल में जिधर की लाइन चलती हो लाइन खींच दो, आप कैसे भी ट्रायंगल बना लो, जो दिल में आ करो, उसकी लंबाई नापो, चौड़ाई नापो भी, लंबाई नापो अलग अलग साइड्स की, और आपको हमेशा पता चलेगा कि दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा ही होता है। बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे इन दोनों को आप ले लोगे, इन दोनों को ले लोगे तो इसका तो कचुमरी निकल जाएगा, तो बहुत ही छोटा है, वो सब ठीक है, लेकिन बड़ा होता है, भले वो इतने से बड़ा हो, इतने से बड़ा हो। कई बार आपका सवाल पूछे जाते हैं, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या कोई ऐसा ट्रायंगल हो सकता है
जिसकी साइड 4, 6 और 5 हो। क्या ऐसा कोई ट्रायंगल आप बना के, आई चैलेंज यू, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप एक साइड ट्रायंगल बना के दिखा दीजिए, इसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है, एक साइड 6 सेंटीमीटर है, एक साइड 5 सेंटीमीटर। कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 + 5, 4 + 6 इज मोर देन 5, 6 + 5 इज मोर देन 6, ये तीनों एक दूसरे से बड़े हैं, ये कभी भी नहीं होगा। So therefore, sum of two sides has to be more than the third side. You know that I am proving. I did a bit of wrong logic, but sometimes it's clear. Like you can't have triangle of this may be possible. हो सकता है. लेकिन if you are taking suppose this 1, 2, 3. Now sum of two sides is the third side. So in this situation the triangle doesn't come up और बिल्कुल भी possible नहीं होता है इसमें triangle बन जाए. It has to be more, strictly more. Like 4 + 6 is more than 5, so it is possible. 6 + 5 is more than, so all three are more than, all two are adding to be more than. So this is possible. But in this case, when you see the 1 + 2 is giving you 3, so you cannot have this triangle. So therefore, it is mandatory that two sides have to be add up to be more than the third side. कैसे भी इसकी applications कहाँ पे होती हैं? इसकी applications यहाँ पे होती हैं कि जब आप कोई टूर प्लान बनाते हैं, जब आप कोई ट्रैवल प्लान बनाते हैं, and you want to make a travel plan, so suppose थोड़ा ट्रैवल प्लान अच्छी बातें हैं तो थोड़ा कौन से कलर में, ग्रीन कलर में करते हैं, चलिए let us go green. Okay, so suppose this is one city, you have to go from here to here, here to here and here to here. तो आपको जाना है यहाँ से. अब कॉमन सेंस भी कहता है कि आप ऐसे जाके ऐसे जाएंगे या आप ऐसे जाएंगे. क्या कहता है कॉमन सेंस? You will go like this because this is easier. So this is what two sides add up and be more than third side. आप कैसे भी चले जाओ, लेकिन अगर आप 2 स्टॉप लेते हुए जा रहे हैं और आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो, बट ऑफ कोर्स समटाइम्स इट हैपेंस, जैसे एरोप्लेन्स में होता है, जो फ्लाइट्स होती हैं उनमें कई बार होता है आड़ी उल्टा सीधा जाती है, क्योंकि कभी उनको फ्यूल भराना रहता है तो उनको वो जहाँ फ्यूल की कैपेसिटी होगी वहीं जाना पड़ेगा. So many constraints are there, like a lot of passengers are there, so they have to take a different turn. But logically always going direct is easier as compared to going like this and going like this. So this is the logic of this property. The two sides add to be larger than the third side. So I hope we have discussed good number of examples, and enough examples I have tried to give you and elaborate you on what are the interior, exterior of a triangle, what are the interior angles, what are the exterior angles, what are their relations. और आप भी इन पे सोचिए, और साथ ही I have tried to give you a good number of examples that how it is useful in life and where it is used in life, whether it is planning your tourist tour or whether it is planning some traffic strategy or whether it is planning some any other activity. So I have shown you how it is used. So I invite you to think of more examples and give them here in your comments. I love to read your comments and go through them, and I will also give you feedback like how the comments are. Okay, so please subscribe to our channel, like our channel, share our videos, and if you want to see more interesting things on a shorter time, then look at our reels and shorts which we are making for you only. So see you next time. Thank you very much.